everyone and welcome to थोड़ा और मैजिक टीनेज स्पेशल। और आज हम बनाने वाले हैं a very tasty and a very healthy quinoa salad। ये देखो ये देखो ये देखो, हाँ एक्टर्स को बुलाओ अपने स्टूडियो में तो ले लिटरली टेक ओवर। हेलो मैम, यू आर नॉट शेफ अमृता रायचंद, आई एम, एंड हु इज शी? Well, I'm Rohanika। अपने टाइम में I'm Rohanika. She is the cutest little teenager, 17-year-old, very established influencer, amazing actor. आपने अगर अभी तक इसको देखा नहीं है तो you have no idea what you're missing out. और मुझे इसे देख के पता क्या लग रहा है कि अगर मेरी बेटी होती तो बिल्कुल ऐसी लगती। What do you think? We look alike, don't you think so? We do। So अभी इसने आपको बता दिया कि आज हम क्या बना रहे हैं। We are making a delicious high protein salad. सारे teenagers को बहुत पसंद आएगा and it's really easy to make. I'm going to do this in 3 amazing steps. So, Okay. are you ready for it? I'm all up for it। So, let's begin. Ten on 10. Okay, so now quinoa salad बनाने के लिए first we are going to boil some quinoa. You like quinoa? I love quinoa। It's a very high protein grain and आजकल के बच्चों को quinoa बहुत पसंद है। quinoa काफी ट्रेंडिंग भी है। बहुत ट्रेंडिंग है और बहुत सालों से ट्रेंडिंग है, जब से तुम Yes. छोटी थी तब से है। एंड नाउ इट्स वेरी इजीली अवेलेबल इन इंडिया, इट्स मेड आल्सो इन इंडिया। पहले इंपोर्टेड कीनोआ मिलता था, वो भी सब खाते थे, ठीक है। सो वन थिंग अबाउट कीनोआ इज दैट यू हैव टू रियली वॉश इट वेल, अदरवाइज ना वो एक आफ्टर टेस्ट, अ लिटिल बिटर टेस्ट कम्स। सो फर्स्ट स्टेप इज वॉशिंग इट, मैंने पहले से धो के रख लिया है। सेकेंड स्टेप, यहाँ मैंने पानी डाला। आई एम गोइंग टू नाउ कीप टेलिंग यू व्हाट टू डू ओके एंड आप करोगे, क्योंकि दिस इज टीनेज स्पेशल। यहाँ मैं टीनेजर्स को सिखाती हूँ कैसे सेल्फ सफिशिएंट बनना है बाय लर्निंग हाउ टू कुक। करेक्ट, ओके। ऐड दिस टू द वाटर, ऑल ऑफ इट। all of it please. Add some more water in this and just give it a rinse. Perfect. ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो जब कुकिंग करना शुरू करते हैं तो अपने आप आ जाता है। Lovely. Beautiful. Now wait, what you do is you can just do this. Easy? Easy peasy. To break that bitter taste of quinoa, Right. जब इसे boil कर रहे होते हैं ना तो इसमें हाँ जी। थोड़ा सा नमक and maybe clove of garlic which you can actually just smash and add, or you can add it as is. As it is। As it is, add it. And although this is my sea salt, which is a finishing salt, but since my team has forgotten to keep the regular salt, we're just going to use this. Okay? Okay, now we'll leave this for boiling. What I'm going to do is I'm going to move it ahead and then I'm going to teach you how to grill vegetables. ओके ठीक है? Now tell me, आपके जो friends हैं उनमें से हाँ। किसी को भी cooking आती है? नहीं, नहीं? मुझे भी नहीं आती। आपको आती है? आपने मुझे बोला था cinnamon थोड़ी rolls बहुत बनाते आ हो। जाती है। cinnamon rolls बनाती है हूँ, ना? थोड़ी बहुत आती Cinnamon है। rolls मम्मी के लिए बनाती है। अभी ये सैलेड मॉम को खिलाओगे? Yes, खिला। And what about friends? A lot of my friends are also health conscious, Ah. so I'm definitely making it for them। That sounds good. Okay, start with some olive oil. All right। You see that bottle there? Yes. उसका ढक्कन निकाल दो। Whoops. Oh, oops। Oops moment. That was a oops moment. चलो डालो। हाँ, Tell थोड़ा- me to stop। हाँ, इतने डेलिकेटली ये बच्चे करते हैं ना, इसीलिए आई स्टार्टेड दिस सीरीज। आजकल के बच्चों को, यो बहन, ओके, नॉट इनफ। Oh, That's the way you do it. It's very little oil got it। and you just Olive oil is very healthy। by the way, this is the mother in the background जिनकी आपको आवाज आ रही है ना, वो पीछे से running commentary मम्मा की Mommy चल is रही है। always watching। हाँ, moms are always watching. Next time mom has to now start teaching you how to cook in the kitchen. वरना I will adopt Someone you. should teach mom also। चोरी पकड़ी गई। But you know what? It's okay. All mothers don't need to know how to cook. And that's why we have your YouTube channel। Actually, that's true. Good girl. Okay, यहाँ जैसे ही तेल गरम हुआ, remember, हाँ जी। very important tip. जब तक तेल गरम नहीं हुआ, don't start throwing in your vegetables. Got it। Okay, because you want them to be nice and crunchy. You don't want them to be Soggy। soggy. Chef, before we grill the vegetables, हमें पता कैसे चलेगा when the quinoa is done?
आई विल टेल यू, बट आई ऑल्सो टेल यू कि यहाँ थोड़ा और मैजिक में ना मुझे कोई शेफ नहीं बुलाता, सब मुझे एम्स बुलाते हैं. Ams. Okay. Okay. Got it. So stick to that. And कैसे पता चलेगा? Very intelligent question. ये जो कीनुआ है ना, इसके grains के around you'll start seeing white circle. A And white when circle. that happens, you know the quinoa is done. Is done. You still will need to have a bite. Al dente, you've heard that word? French word, मतलब firm to the bite. जैसे Okay. पास्ता हम करते हैं, वैसा ही उसका फील होना चाहिए, लेकिन एक सर्कल आएगा. I'll show you when it happens. All right. Okay. अब टीनेजर्स के साथ जब शूट करते हैं तो हम तो ग्रिलिंग स्टार्ट करने वाले थे. हाँ, ये हमने शॉट दिया था. उसके बाद क्या हुआ? इनको मन किया एक चॉकलेट खाने का. उसके बाद क्या हुआ? पानी पीना था, कुछ बातें करनी थी. तब तक क्या हुआ? किनुआ हमारा बॉयल होके हो रेडी हो गया है. ठीक है, तो पहले ये किनुआ को निकालते हैं, वरना ये ओवरकुक हो जाएगा एंड यू डोंट वांट दैट. Okay. और फिर हम ग्रिलिंग ऑफ द वेजिटेबल स्टार्ट करेंगे. ओके, आई विश ये सारा कुछ रोल हो रहा होता तो आप देखते कि क्या क्या मस्ती हो रही है. यहाँ मैंने गैस बंद कर दिया. नाउ लेट मी शो यू. कैन यू सी दिस सर्कल्स, वाइट वाइट लाइन ऐसे अराउंड इट दिख रहा है? Yes, I can. इसका मतलब ये देखा राउंड राउंड सर्कल, इसका मतलब our quinoa is done. So I'm just going to strain it. Quinoa is boiled. Yes. You have seen how it's done. Yes. Now on grilling of the vegetables. अच्छा, All right. कभी भी फायर के सामने खड़ी हुई हो? हाँ. अच्छा, पक्का ना? हाँ, हाँ. ठीक है, वरना मैं उधर आने वाली थी. मम्मी के मेरे को डैगर्स दिख रहे हैं. ठीक है, यहाँ तेल गरम हुआ. So we're going to start with the vegetables. एक by the way ये ऐसी टीनेजर है who loves all vegetables. Yes, because they're all healthy. हाँ, you please meet my son. ब्रोकली देखे बोलती है यम ब्रोकली. हाय काश मेरा बेटा भी कुछ ऐसा बोलता. बट ब्रोकली को ना मैंने थोड़ा सा बॉईल कर लिया है 30 सेकेंड्स के लिए. जस्ट ब्लांच्ड इट. व्हाट इज ब्लांचिंग? यू बॉईल द वाटर, dunk in the veggies and take it out and put it in ice water. Now add it. Be careful. Just add all of them since you love. Okay, wait. I'll do this. Come here. Come here. Come here. It's I'll okay. do it. I'll do it. You'll do it? Yes. Okay, do it. I'm going to stand here. तो ब्रोकली आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज वेजिटेबल्स इज स्लाइटली हार्डर, तो इसीलिए उसे पहले हल्का सा हमने टॉस कर लिया. अब कम विल ऐड सम पेपर्स. Yes. तो रेड बेल पेपर्स And the yellow. ओके. अब इसमें ना हम थोड़ा सा सीजनिंग करेंगे. Okay. सो यू लाइक सम मिक्स्ड हर्ब्स एंड चिली फ्लेक्स? Yes. या. सो वील ऐड सम मिक्स्ड हर्ब्स फर्स्ट. Yes. Some chili flakes for which don't use your hands. Yes. Huh? Okay, I'll add this for you. ठीक है? And last but not the least, we'll add some salt. Okay, now I'll show you how to toss this. I could never do this. That's why I didn't ask you to do it, but with practice you'll be able to do it. Practice And makes start perfect. करना थोड़े vegetables के साथ, Okay. so that it's easier for you to toss it up. Got it. Now, you like onions? Yes. Okay, तो थोड़े बड़े बड़े काट के अनियंस इसमें डाल देंगे. Just for that added extra crunch. Crunch. Now we won't toss it too much. All right. है ना? Because we just want इसका residual heat भी होगा, हाँ तो जी. उससे भी थोड़ा थोड़ा पकता जाएगा. So we ठीक don't है. want the veggies to be very soft, the onions to be very soft. Salad Got it. is all about the crunch. Right. Right. Okay, so let's take it out. This is already looking so appetizing. I'm telling you, you're the one of those rare teenagers जो ऐसी बातें बोलते हैं. लेकिन जो बाकी teenagers हैं जिनको पसंद नहीं है vegetables, I promise you, इस तरीके से जब आप खाएंगे ना, आपको बहुत पसंद आएगा. That's मेरी guarantee. है ना? So tell all your teenage So, audiences. my fellow teenagers out there watching the video, I can vouch on this salad. It's going to be very tasty. Now what all steps are done? Quinoa is ready, veggies are done. ये जब तक ठंडा होता है, what are we gonna do? Salad का most important Dressing. component. There, she's a smart girl. Let's make the dressing. So एक मैं All right. simple सा dressing बना रही हूँ, sweetie, which is a simple vinaigrette. But this is a classic, amazing recipe. You can't go wrong with this. All right. Just follow my instructions. Do this at home. कोई भी jar ले लो और उसमें dressing बना के रखो, so that every time you want a salad, Salad. you don't have to make the dressing again. All right. Okay, that's tip number 1. Second tip I'll give you as we start going with it. हमेशा सैलेड की जो ड्रेसिंग है वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल से ही बननी चाहिए. सो लेट्स ऐड इट. एंड जो रेशियो होता है ना ऑलिव ऑयल का
for a salad, it's always 3 parts to 1 part vinegar. So Okay. 3 parts of olive oil, 1 part of vinegar or nimbu ka juice or orange juice. Lovely. All done. Okay, all done. मैं balsamic vinegar use कर रही हूँ. You can use, like I said, nimbu ka juice, orange ka juice, anything that you want, which is khatta. Khatta. Huh? Okay. So second thing about a salad dressing is it has to have an oil. It has to have something khatta. Khatta. It has to have something salty. Okay. It has to have something meetha. And Okay. it has to have something umami. Umami. Umami is that sixth flavor, jiska flavor is something that you can't describe. When you Okay. have it, it just feels amazing. Okay. Got Okay? चलो. Now let's add this. So ये अब जो भी quantity है olive oil की, इसका 1/3. it. इसका 1/3. Now how will you know 1/3? Can you see this? Yes, I can. That looks so cool. It looks cool, हाँ? क्योंकि ये watery है, right? Vinegar. हाँ जी. और ये oil है, तो वो हमेशा नीचे settle हो जाएगा. But this is not yet 1/3. Just add a little bit more. Balsamic is actually a little strong also, so this much is enough. Now I'm going to add a dash of salt, Salt. some crushed pepper, Okay. and now you add the honey. I have a Okay. cute bottle. Just pick it up. Nice. Enough? Just turn it like that, so everything drips out. We'll taste later. अब umami flavor के लिए मैं क्या डाल रही हूँ? Look at that. What is that? Tahini. No, but Then? you can actually add tahini also. But this is mustard. Oh, I love mustard. Love mustard. Now there is no dressing without mustard. Mustard. I've used Dijon mustard. You can use any mustard of choice. Grainy mustard also tastes very good in a salad Or- dressing. Okay. So this will not only add the umami feel to our dressing, हमारे dressing को वो emulsify भी करेगा. It's just going to Understood. make it nice and creamy. So you're going to shake this. Yes. So let's do it. Nice, vigorously. Okay. Take out all your gussa on whoever you want to take out. Okay. इसे कहते हैं प्रसाद for tasting. Let's taste it now. This is yum. And you got dressing on your. I You did. have a muchi of dressing. Wait, I'll give you a tissue. Yum. Pakka. Yum. Balance of flavors is nice. Yes. Perfect meetha, perfect saltiness. Perfect. Yeah. Okay. तो अब सारे हमारे components तैयार हैं. Now all we have to do is put it all together. That's it? That's it. Salad ready तो हो जाएगा, लेकिन end में I have this one ingredient which I think takes the salad to the next level. And what is that? End में बताऊंगी. चलो, let's start tossing first. You're gonna love this step as well. Okay, so यहाँ मेरे पास एक bowl है. इसमें डालो पहले quinoa. Okay. Like this. Lovely. Now goes in the Vegetables. vegetables. ये सारे ठंडे हैं. इस salad को आप warm भी खा सकते हैं, but I like it chilled, so you can do what you like. Now, finally, time for Our dressing. ASR vinaigrette. And now you make it your vinaigrette. ठीक है? ऐसे Okay. एक bottle बनाना, उस पे रोहाने का लिख देना. So dressing बनाने के बाद what happens is थोड़ा settle हो जाता है सारे Settle हो ingredients, जाता है है. ना? हाँ जी. क्योंकि वो liquid है with oil. So again, just always shake it to emulsify it. Again. Now you see the difference Yes. in what it was earlier and now. पहले ऐसे just the oil was coming out, right? Now you can toss. Yeah. You want a fork? All right. Okay, just toss, toss, toss now. Like this. Yes. Am I doing it right? You're doing it absolutely right. Very nice. Very nice. Just make sure कि सारे जो veggies हैं, सारा quinoa, उस पे dressing लग जाए. Yes. Lovely. How pretty it's looking, ना? Absolutely. ये side का भी. Perfect. Okay, now I've learned enough. I want to eat it now. Okay, you can. लेकिन not without that last ingredient I was talking about. Right. So this is some feta cheese, and trust me, feta cheese आप salad के ऊपर जब डालते हो ना, it adds creaminess, some saltiness, and that extra umami flavor that you like.
यूज अ फोक नहीं तो ये हाथ में क्रम्बल हो जाता है. Yummy. That should be enough. Now dig in. Done? Done, done, done. Okay, अब मैं ऐसे खाने नहीं दूंगी ना तो ये मारेगी मुझे. Come. And the first bite's for you. Oh, I know you've been waiting. You have it and tell me how you like You're it. the chef. Okay, fine. Man, you're gonna love it. Hmm? 10 on 10. 10 on 10. चलो पप्पू पास हो गया for a change. I'm so glad you liked it. और अगर आपके लिए भी ये वीडियो पास हुआ है तो like and share it with all your friends and family and subscribe to Amrita Raichan, chef and beyond. Yay. Okay. Bye bye. आई भी पहले थी जा भी पहले रही है. Bye.